All right, today we will start cables and suspension bridge types of question. तो इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा से कुछ नहीं है, जैसे आपने आर्चेस में बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस करनी है। तो क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक जनरल केस ले लेते हैं। टॉपिक इज केबल्स, एनालिसिस ऑफ केबल्स and suspension bridges. So suppose this is one support and one cable is attached to it. Okay, one cable is attached to it. So we know the cables and ropes are only, they are only able to take the tensile forces. Compression force लेंगे तो not possible. For example मेरे पास वायर नहीं, anyway. Okay, you can see मैंने आपको मैकेनिक्स में भी पढ़ा है कि जो रोप है आप उस पर टेंसाइल फोर्स लोगे तो टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली इट विल टेक टेंशन, बट अगर कंप्रेशन लगाओगे इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्सेस, राइट? So suppose this is string or wire or steel cable, right? But when these cables are subjected to some loads like this, suppose W1, W2, W3 are the loads applied at a distance, suppose A, B, this is C, E, support A and B are the hinge supports. Due to application of these point loads W1, W2, W3, this cable tend to bend, right? It will deform in different shape. What would be the shape? It will deform like this. Something like this. This is the deflected shape of the cable. So this diagram can be modified like this. Now I am directly drawing the deflected shape. It may be like this. Like this. This is the deflected shape. After application of load, so the load W1, W2, W3, right? So this is the length of the cable, initial length. या आप ये बोलें कि this is the length of length between the supports, which is obviously equal to A plus B plus C equal, right? Now two types of question may arises from this chapter. That first, you have to find the tension force generated in the string. तो उसको कुछ नाम दे देते हैं सब. This is A, this is B, C, D, right? So you have to find out the tension force generated in string
AC, suppose in a string CD, GE. So let T1, T2, T3, T4s are the corresponding tensile forces generated in the string T1, T2, T3, and T4 are the tensile forces in the string AC, CD, DE, DE, respectively. Right. Now, if I want to draw the free body diagram of the force system, apply here. So these are vertical reaction is this, right? So this can be draw here. Suppose vertical reaction at A. This is vertical reaction at B, right? And obviously horizontal thrust H, H. So if you talk about the reaction produced, reaction is just opposite to this tensile force T1, right? So just opposite to T1, this would be support reaction, suppose RA, and इसी के corresponding support reaction is RB. RA and RB are the support reaction. VA is the vertical component of this. H is the horizontal component of this reaction. Alright. Similarly, there RB is the support reaction. VA is the vertical component of that. H is the horizontal component of that reaction. Now, one thing is also to be noted here at this point. Say, now you can see the cable made some angle theta 1 with the horizontal. This made theta 2. This is theta 3, theta 4, like this, theta 5. Right. So with the horizontal, different angle is made by the cable. Two types of question may arise from here. First, to find out the tension, and second, to find out the लेंथ ऑफ केबल या लेंथ ऑफ कोड बोलते हैं, तो कोड की लेंथ निकालने का क्वेश्चन आएगा या फिर टेंशन फोर्स निकालने का, या दोनों भी पूछ, ठीक है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? To solve this, we will use graphical approach along with the numerical approach. Now, sir, this is a figure. How to find the tensile forces? Let's try to understand this process. First, the condition is if you want to analyze this cable system supported by these two supports and subjected to some kind of force system W1, W2, W3, then equilibrium equation, yeah, equation of equilibrium should be applicable here, right? Equation of equilibrium should be applicable here, right? So here two conditions must satisfy. First condition, two condition of equilibrium must satisfy. And what are those conditions? Condition is, first, the force polygon must be closed, and then funicular polygon must also be closed. Now what is this? Let me draw the force polygon, you will understand that. Mechanics में already पढ़ चुके हैं. How to draw that? Suppose this is a tension T1. What you need to do? First,
इन द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप आर्चेस में सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करते हैं, लाइक वे स्टेप 1 फाइंड vertical reaction VA and VB by using static equilibrium equations, right? Step 2 in step second you can see that here you see this point C from the original position, it is dipped. How much dip is there? Say dip is y1. Here dip is for point C. Let not y1, yc is a dip. Here yd is a dip. Here ye is a dip. यानी केवल कितना डिप किया है? This is yc ydy. What is the dip at support? 0. What is the dip at this? Support B? 0. Now in the question, whenever the question is asked, it is always provided with a central dip. It may be at center or somewhere. The maximum dip is given to you. The maximum dip is given to you, right? So in the cable, because cable is flexible, the moment resisting capacity is 0 everywhere, right? But I don't know what is the vertical distances. So where to take the moment, because we want to calculate the horizontal thrust. Horizontal thrust के लिए moment लेना पड़ेगा. आर्चेस में क्राउन पे ले लेते थे जहाँ पे मोमेंट जीरो होता था. 3 इंच आर्च में क्राउन पे मोमेंट जीरो होता था. So we used to take the moment at point C on the ground, right? But this time we don't know where is hinge. There is no hinge. It's cable, and at the cable bending moment everywhere is 0. So at point D, because we know this YD in the question, always this maximum dip is given. So if maximum dip is given, you can take the moment about this point that uh, horizontal thrust into this dip will be equal to VA into whatever the distance it may be, A plus V, right? Step 2, find horizontal thrust. By taking moment about D. क्योंकि D पे known है as dip at D, YD is known to us. Okay. Then step 3, draw force polygon. फोर्स पॉलीगन कैसे ड्रॉ करना है? तो फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करने का मेथड समझ. फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना आ गया, क्वेश्चन करता मैं उसका मैथमेटिक्स लगेगा. आइए देखते हैं कैसे. इफ यू नो आर ए आर बी, राइट, एंड obviously the W1 W2 W3 is known to you. First, suppose W1 is 10 kilonewton. On the scale, draw a line of 1 centimeter. या जो भी स्केल पे आप ले सकते हैं. 10 किलो न्यूटन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर, जो भी आप स्केल लेके लाइन ड्रॉ कीजिए. कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज द W1. Suppose 30 kilonewton load is applied. So 3 centimeter line I am drawing. 1 centimeter indicating 10 kilonewton load. So this is the W1. Then next W2. Depending upon the magnitude, W2 is drawn. Then
W3. W3 is S. So then this will show. Okay. Suppose P to Q. PQ line representing the force W1 kilonewton. Then Q2 R representing W2, and then R2 S representing W3. PQ represents W1, QR represents W2, and RS representing W3. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है. Okay. The first task is done. You have plotted W1, W2, W3. Now their corresponding tension. तो आपको मैंने वेक्टर डायग्राम बनाना सिखाया था मैकेनिक्स के अंदर. Same rule is to be applied. W1 is meeting with the tension 1. So force polygon go like this. The same direction I am taking. ठीक है. Then in this direction it's T2, and this is T1 force. This is T2. Now this is T3. This is T. क्लियर है फोर्स पॉलीगन ऐसे बनाना है. T1, T2, T3, T3, T4, T4. जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में लेना. अब हमें कैसे पता होगा सर हम स्केल से परफेक्ट कैसे बनाए? परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. मैंने बोला ना, ये कॉम्बिनेशन है ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड का. तो यहाँ पर ग्राफिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल मेथड को मिक्स करेंगे और सॉल्व करेंगे. Now with the horizontal, theta 1 is there. Now what is horizontal here? So for this, step 4. Draw, let this point is O, right? So draw PO, QO, RO and SO as they represent the vector of tension force in related chords. Okay, related chords में T1, T2, T3, T4, PO, QO, RO, SO डिनोट करते हैं. Step number 5. Is it visible? Step 5. Step 5. Now draw one normal. Draw normal from O. Draw a normal. तो उस नाम दे देते हैं. Say OM. Draw a normal OM from O on PS. OM represents, क्या रिप्रेजेंट करेगा OM? हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है. OM रिप्रेजेंट H, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. इतना बनाना आना चाहिए आपको. ठीक है.
Now I'm taking this. The next page. Right. It is done up to now. From P to M, right? From P to M. What does it represent? Yeah, SLO. PM represents vertical reaction at A. That means VA is nothing but PQ vector, sorry, PM vector, and VB, vertical reaction at B, representing by SM vector. ठीक है, तो ड्रॉ कर देते हैं आप फ्रॉम P to M and M to S. This is nothing but VA and VB. V and VB. ठीक है. Now from this vector diagram, how to calculate the tension? So you have to remember that from the horizontal, what this tension code from the horizontal T1 making an angle theta 1. From this horizontal OM, this angle is nothing but theta 1. This angle is theta 2. This angle theta 3. This angle theta 4. समझ गए? कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये टेंशन चला गया आपका, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल आ गया. हॉरिजॉन्टल से T1 तक का जो एंगल है वो है थीटा 1. फिर यहाँ से T2 निकल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल है थीटा 2. फिर T3 निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा 3. फिर T4 निकल गया, हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा 4. गॉट इट? आई होप अभी समझ में आया होगा. कितना स्टेप हुआ? 5. स्टेप 6, मार्क theta 1, theta 2, theta 3 and theta 4 from horizontal OM to tension vectors T1, T2, T3 and T4 respectively. Once you do this, how to calculate now tension force? Calculation of tension force generated in each chord. So T1 कैसे निकला? T1, T2, T3, T4. How to find it from here? Now, referring to force polygon, in triangle OMP. OMP में दिखाई दे रहा है, ये है बेटा. This is triangle OMP. Got it? OMP. Here OM is the base. That is horizontal thrust. Already know. What is T1? We don't know. That is unknown parameter. I have to calculate. But I know the theta 1. Right? Sir, we don't know the theta 1. How we will find the theta 1? I don't know. Okay. You don't know theta 1? तो पहले theta 1 निकालने सीखो. ठीक है?
साइड में बता देता हूँ कैसे निकलता है ज्योमेट्री थीटा वन। इट्स जस्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, इट जस्ट सिंपली ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे यहाँ पे सीखते चलिए। यहाँ पे थीटा वन कैसे निकलेगा, फिर से देखिए इन ट्राइंगल, किसमें देखूंगा, ओ पी एम में देखिए, इन सेम ट्राइंगल ओ पी एम। डू यू नो द परपेंडिकुलर, इसको अलग से बनाता हूँ छोटा सा, ये ओ है बेटा, ये एम है, ये वैल्यू है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, और ओ से ये चला गया टी वन, और ये है पी। तो आप क्या पी एम की वैल्यू नहीं पता थी, पी एम पता है, पी एम तो वी ए है, और ये निकाल चुके हैं हम। इन ट्राइंगल ओ पी एम, टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज पी एम, what is base, base is horizontal thrust, so what is pm actually, pm is nothing but reaction at a vertical reaction at a and h. So what is theta, theta is equal to tan inverse of vertical support reaction at a by h। मिल गया आपको क्या, थीटा वन मिला है, थीटा वन, इट्स थीटा वन, ठीक है, जो एंगल बना है ये थीटा वन है। लाइक वाइज थीटा टू निकाले, एक और निकाल के देखता हूँ, टेन थीटा टू कहाँ निकलेगा, कौन सा ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ओ एम पी देखना पड़ेगा, इन ओ एम पी, अब ओ एम पी को देखो, ओ एम पी, ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स जस्ट थीटा टू, नॉट ओ एम पी, ओ एम अप टू क्यू ओनली, अप टू क्यू ओनली, so what is up to q, so tan theta 2 perpendicular by base, what is perpendicular, perpendicular is this 2m, what is base, base is same h, so what is the value of qm, ओ qm कैसे निकालेंगे, तो क्यू एम को देखिए आप, अगर वी ए में से आप डब्ल्यू वन माइनस कर दें तो व्हाट लेफ्ट, इट्स क्यू एम, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस डब्ल्यू वन बाय हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो थीटा टू कैसे निकल जाएगा, टेन इनवर्स वी ए माइनस डब्ल्यू वन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। So just by simple trigonometry you can easily find out theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, right? So after finding these thetas we can easily find tension force generated each chord। कैसे, अब सेम ट्राइंगल में देखिए, आपको थीटा वन पता है तो टी वन नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा लो, कोस थीटा वन पता है अभी हमें, तो क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस इन दिस ट्राइंगल, एच पता है हम, व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज T1, right? So how to calculate this T1? T1 is h by cos theta 1 is equal to h sec theta 1। cos से निकल जाएगा, sec में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, ये h sec theta 1। Did you understand till now? बोले, yeah, there is another method, क्या है मेथड, one more thing you can do in this triangle, you know this h, you know this h, and you know this pm value, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस लगा लो, अगर पाइथागोरस से निकालूं मैं इसको तो क्या हो जाएगा, hypotenuse का square equal to perpendicular square and base square। What is perpendicular square? It's pm square plus what is base square? Base square is om square।
इट्स नथिंग बट Tm का वैल्यू कितना है? Tm तो आपका जस्ट वर्टिकल रिएक्शन है, तो ये हो गया Va का स्क्वायर प्लस OM क्या है? OM आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, तो ये हो गया H स्क्वायर। यानी T1 कैसे निकलेगा? Va का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट्स इट। सिमिलरली T2 रूट ओवर, बेस नहीं बदलेगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QM। QM की वैल्यू कितनी थी? टोटल VA में से W1 माइनस कर लो, VA माइनस W1 का स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है। सिमिलरली T3 and T4 can be calculated। सेम मेथड से T1 T2 T3 T4, समझ गए? तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है यहाँ से कि कैसे हम टेंशन फोर्स कितना जनरेट हुआ है स्प्रिंग में या रोप में या कोड में, है ना, या वायर में, ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। ओके, लेंथ ऑफ द कोड, आगे चलते हैं लेंथ निकालने के लिए। Here is the diagram there। Okay, now we need to find length of chord। What is length of chord? Say this is the length one, L1 कहाँ से कहाँ तक है? A पॉइंट से लेके और ये B पॉइंट, A to B L1 है ना। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड लेंथ ऑफ ईच कोड। ईच कोड का लेंथ निकालना है। जैसे L1 विच इज इक्वल टू व्हाट? A2 C। AC कोड का जो लेंथ है वो L1 है। सिमिलरली L2, L3 and L4 are the corresponding values। मतलब यहाँ पे L1, ये L2 हो गया, ये L3 और वो L4। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ कोड का क्वेश्चन आएगा। टोटल लेंथ ऑफ कोड, हाउ टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ कोड। तो टोटल लेंथ ऑफ कोड कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। यानी कि मुझे बेसिकली क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। L1 L2 L3 L4 निकालना है। तो अगर मैं L1 L2 L3 L4 निकाल लूँ देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हाउ टू कैलकुलेट L1? L1 is this, and now suppose this distance is given to you as I told you in the previous figures। This length is, suppose this is given as A from this to this, it's B from here to here, it's C, and now it is. So if this is θ1, so this is also θ1, interior angles, right? So I have the base, and I need this length 1 L1। तो फिर से क्या हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा लें यहाँ पे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा ले, कैसे लगेगा? और L1 क्या फॉर्मूला बनेगा? थीटा है, बेस है, हाइपोटेनस है, कौन सा लग जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस लग जाएगा। cos θ1 will be equal to base is A, hypotenuse is L1। We don't know what is it, so what is L1? L1 is A upon cos θ1 is equal to A sec theta, A sec θ1। Similarly L2 क्या हो जाएगा? B sec θ2। L3 क्या हो जाएगा? C sec θ3। L4 क्या हो जाएगा?
d sec theta 4, right? Then length of chord L1 plus L2 plus L3 plus L4, and hence your question is solved. There is alternative approach also to find out the length of chord. What is that alternative approach? For the same question. Alternatively, consider the cable system as simply supported beam subjected to given load system. मीन्स ये जो आपका केबल है ना, सस्पेंडेड केबल, इसी को एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह अज्यूम करो. तो दिस इज योर स्पैन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि टोटल लेंथ एल. And loads are applied like this: W1, W2, W3. The support A, B, right? Okay. The distance between them is A meter, B meters, meter, D meter, है ना? ऐसे ही assume किया हमने. Total length A plus B plus C plus D, right? Total length A plus B plus C plus D. Now draw the bending moment diagram. Draw bending moment diagram. As the bending moment diagram shows, the reflected shape of chord. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा? ये स्पैन हो गया आपका. अब क्योंकि ये सेगिंग है तो सेगिंग में ऑलवेज पॉजिटिव, तो बनेगा ऐसा W1, फिर W2 की तरफ ऐसा, फिर W3 की तरफ ऐसा, लाइक दिस. तो इसी को उल्टा बना देना है जस्ट. इन दिस प्रोसेस मेक इट जस्ट अपोजिट सो दैट इट सेम्स लाइक अ रिफ्लेक्टेड शेप ऑफ chord. ठीक है, जस्ट उल्टा बना दे रहा हूँ. So it will be goes like this. बिल्कुल वैसे ही जस्ट उल्टा बनाया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. व्हाट इज दिस वैल्यू? This is the VA into VA is the support reaction, VB is the support reaction, right? So this would be VA into A, right? Similarly from here VB into D. For here it is either calculate from the right hand side, left hand side. Why I am taking small letters? It's capital A, VA into small a, VB into small d, और सेंटर पे इट्स कहीं से भी ले लो, इस टाइप से ले लो, VB into C plus D minus W3 into C. तो मैंने बेंडिंग मोमेंट तो निकालना जानते हैं यार, सिंपल चीज़ है. वो निकाल के वैल्यूज को पुट कर लो. तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे M1, M2 वैल्यूज, M3 वैल्यूज. सपोज कुछ भी वैल्यूज आई यहाँ पे. नाउ दिस इज शोइंग द
dip basically at point कितना था ये C point था, it's YC, YD and YE, right? So you want length of chord, ठीक है? So for length of chord, obviously you know already this distance is A, this is B, this is C, and this is D. That is known to you. I want this length L1, L2, L3, and L4. So again, this is nothing but 90-degree angles, na? See here, 90 degree, 90 degree, 90 degree, right? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सिर्फ ये परपेंडिकुलर्स निकालने हैं, यानी कि यहाँ पे डिप चाहिए आपको YC, YD is given to you, YE you know. So from the geometry, one can conclude that the ratio of YC to YD to YE must be equal to the ratios M1 ratio, M2 ratio, right? Suppose you want to calculate the dip YC. For YC, how to calculate this? Take the ratio YC by YD will be equal to M1 by M2. M1 is known to us, M2 is known to us, YD is already given in the question, the maximum dip. So from here, YC can be easily calculated as M1 by M2 into YD. By same concept, you can calculate YEA as well. कैसे निकलेगा YE? YD by YE ratio, या उल्टा लिख लो YE by YD ratio will be equal to YE के corresponding M3 to M2 ratio. From here, YE can be calculated as M3 by M2 into YD. In this expression again, M3 is known to us, M2 is also known to us, YD is also known. Once you get the central dip, central dip is already given when you calculate dips at different levels YC, YE, right? So again, एक निकाल के दिखाते हैं how to calculate this L1. दिखाई देगा क्या यहाँ पे देखिए for L1 you want L1 will be equal to Pythagoras लगा लो a square plus yc square. Similarly L2, L3, L4, this is the alternative method. So from here you are able to find out the dip as well. अलग अलग लेवल पे आप dip भी निकाल सकते हैं और लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? This is the alternative approach. Any doubt here? Okay. Now we will start one question on this same concept. We will try one numerical problem. Now write down one question. A chord supported at its ends
A cord supported at its ends 40 meter apart, 40 meter apart, carries loads of 20 kilonewton, 10 kilonewton, and 12 kilonewton, and 10 kilonewton, sorry, 20 kilonewton, 10 kilonewton, and 12 kilonewton at distances of 10 meter, at a distance of 10 meter, 20 meter, and 30 meter from the left and from the left and if the point on the cord if the point on the cord where the 10 kilonewton if the point on the cord where the 10 kilonewton load is supported is 13 meter below is 13 meter below the level of end supports, determine number 1 the reactions at the support, number 2 the tensions in the different part of the cord, number 2 is the tension in the different parts of the cord, and number 3 the total length of the cord. ठीक है. Okay, now let us solve this question. As per the question, the cable is attached. The distance between the two supports is given as 40 meter, and the load are applied as how much the load it was 20, 10, and 12. 20, 10, and 12. Kilonewton, 10 kilonewton, and 12 kilonewton at A and B. Okay, the vertical reaction will be A and BB.
distance is 10, 10, right? And the center dip, यहाँ पे 10 किलोमीटर लोड दिया है, वहाँ पे बोला है ना, the dip is 13 meter it is, right? So first find the vertical ratio. So taking moment about A, कितना होगा, PB into 40 will be equal to 20 into 10 plus 10 into 20 plus 12 into 30 हो गए 200 plus 200 plus 360 by 40 is equal to 40 and 30, 20, 760 by 40, 0 0 get cancelled out, 19 for the 26, so it's 19 kilometers. But due to summation of all the forces in y direction as 0, so total force, total reaction, that is a very basic thing, not to write again and again बच्चों की तरह. तो but VA plus VB होना चाहिए. तो लोड क्या है, लोड is 20 plus 10 plus 12, that is 42 kilonewton. So therefore VA is equal to 42 minus 19 is equal to 23 kilonewton. So VA 23 kilonewton, VB is 19 kilonewton. Now find the horizontal thrust H. Right. How to find horizontal thrust? Find horizontal thrust by taking moment about. तो इनको नाम दे देते कुछ, मान लो कि ये B पॉइंट हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए C हो गया, A B C, it's D and B. Oh sorry, D is already taken. D is already taken. So if B is taken, then it's D E. So moment कहाँ लेंगे, about D. Why at D? Why not at C? अरे D पे पता है ना vertical distance. How much it is? BA into 20 should be equal to clockwise, anti-clockwise, H into 30, 13H plus 20 into 10. What's the VA value? VA value is 23. So 23 into 20 will be equal to 13H plus 200 is equal to 23 into 2, 46. So 460 minus 200 by 13 is equal to H is equal to. So it becomes 260 by 13. 13 to the 26. It's 20 kilonewton. So H is 20 kilonewton. Next step to draw the force polygon. Simple. So 20, 10, 12. वैसे तो आपको रफ डायग्राम बना लेना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, सपोज this line is representing 10 kilonewton, right? So I am taking it 10 kilonewton.
क्या इंडिकेट कर रही है? ये है मेरा W1, यानी इसको मैं मानता हूँ P एंड Q। P Q क्या बता रहा है? W1 ही। ओके, देन बट इट्स नॉट 10, सॉरी इट्स नॉट 10, इट्स 20 ना। ओके, ऐड वन मोर स्ट्रिंग। दिस इज PQ। आपको स्केल से नहीं बनाना है, अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके से पॉलीगन एक्चुअली बनता है। ठीक है, दिस इज PQ रिप्रेजेंटिंग 20 किलो न्यूटन W1। नाउ नेक्स्ट इज 10 किलो न्यूटन। एड इट। ठीक है, so this is QR. What is QR? QR is nothing but 10 kilonewton. Then it's 12. It is 12, right? It's 12. ये 10 का लाइन था, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। It's 12। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ऐसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं एकदम, जिस अंदाजा से बनाइए आप। देन देखो, जैसे अंदाजे से मैं ये बना दूंगा, ये लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? T1। T1 in this line, T2, T3, T4. That this is S, this is O point. This representing T1, this representing T2, T3, T4, है ना? फोर्स पॉलीगन बन गया। रिकॉल करो, ये क्या था बेटा? इट्स W1 20, इट्स 10, इट्स 12। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट O। नॉर्मल डाल दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करे? ये मेरा H है। कितना है? 20 है। दिस वैल्यू इज 20। ठीक है, फोर्स पॉलीगन बन गया। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट M पॉइंट था ना, ये याद रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन कितना? 23। एंड देन रेस्ट VB 19। अभी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कन्फ्यूजन ना रहे, चलो ये देते हैं VB। ऑल द वैल्यूज इन किलो न्यूटन। ठीक है, ओके, दिस मच इज डन। नेक्स्ट, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड फर्स्ट लेट अस फाइंड थीटास। थीटा फाइंड करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से दिस एंगल वुड बी थीटा 1, दिस एंगल वुड बी थीटा 2, दिस एंगल थीटा 3, दिस एंगल इज थीटा 4, राइट? फाइंड थीटा 1। थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इसका परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर इज 23 एंड बेस इज 20। 23/20, it's 49 degree। Theta 2 tan inverse, base is not changing, perpendicular does। What is perpendicular? This QM value कितना है? 23 में से 20 हटा दो, क्या बचेगा भाई? कितना है? 3/20 tan inverse
8.53 degree. Similarly, theta 3, tan inverse, base does not change, perpendicular does. इसके लिए perpendicular कितना है? Only this much value. तो ये कितना हुआ? 19 minus 12 is equal to 10 by 20, tan inverse 19.29 degree. Theta 4, tan inverse, perpendicular does not change, sorry, base does not change, perpendicular does. How much? 19. .53 degree. Is it clear? Done. So what we have calculated? We have all the thetas now. ठीक है? Right. So here, this is the angle theta 1 made with the horizontal, the theta 1. Right. What I want this length L1. What is L1? Yes. So two things is to be calculated now. T1 L1, T2 L2, T3 L3, T4 L4. यही तो निकालना है बस क्वेश्चन. T2, T3, T4. Then L2, L3, L4. Only these parameter is to be calculated now. Right. So first calculate tension वाला part. Tension टेंसाइल फोर्स निकालते हैं. Tension in each chord. So referring to force polygon diagram. What is T1? In triangle OMP, T1 is equal to root over बेस क्या है? OM है 20 square. What is perpendicular? It's 23. What is T1? 23 square plus 20 square, then root. So T1 is 30.48. 30.48 kilonewton. Similarly, T2. What is perpendicular for T2? It's small. कितना? QM. QM कैसे निकलेगा? 23 minus 20. It's 20.22 kilonewton. T3 root over 20 square. What is this perpendicular for this? This is total 19 minus 12. 11 square plus square root answer 18979. T4 root over 44. Perpendicular is this directly 19.
That's 27.58 kN. T1, T2, T3, T4 is finished. Now next task is to find L1, L2, L3 and L. Length of each chord. Now from here, you know the theta 1. So from here you can calculate tan is length 1. L1 is equal to tan sec theta. ये मैं समझा देता हूँ फिर से बाद में, शॉर्टकट नहीं करते। देखिए ये यहाँ पे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे आप cos थीटा 1 लिख सकते हैं बेटा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस? बेस इज 10 मीटर, हाइपोटेनस इज लेंथ L1, यही तो चाहिए आपको। L1 हो जाएगा 10 बाय cos थीटा 1, इसी को मैं 1 बाई cos थीटा sec थीटा लिख देता हूँ, पर sec थीटा कैलकुलेटर में नहीं है तो 1 बाई cos थीटा करके निकाल ली। तो व्हाट इज द थीटा 1 वैल्यू? थीटा 1 वाज 49 डिग्री, so you can write 10 cos 49 is equal to 10 divided by cos 49, it's equal to 15.24 meter, 15.24 meter. Similarly cos theta 2, cos theta 2 कहाँ बनना है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है थीटा 2, राइट? तो थीटा 2 cos, अगेन 10 बाय L2, L2 कितना आ जाएगा? 10 बाय cos थीटा 2 इक्वल टू 10 बाय cos, व्हाट इज थीटा 2? थीटा 2 इज 8.53, 10 by cos 8.53 is 10.11 meter. Similarly, cos theta 3, where is theta 3? To the theta. तो शॉर्टकट मान ले, 10 L3 डायरेक्ट निकालते हैं, L3 is equal to 10 upon cos theta 3, 19.29. It's 10.6 meter. Similarly, L4 will be 10 by cos 43.53 is equal to 13.8, right? So what is the total length? Total length is L1 plus L2 plus L3 plus L4. So here L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4 is equal to, what is L1? L1 is 15.24 plus 10.11 plus 10.6 plus 13.8. So total length of the deflected chord is 15.24 plus 10.11 plus 13.8. It's 49.75 meter. So 49.75 meter is the answer. That's how you can calculate. So length को कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी था, जैसे मैंने बताया, उसे भी निकाल के देखते हैं। अल्टरनेटिवली क्या बोला था मैंने? आप सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस केबल को, तो ट्रीट कर लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। दिस इज द वर्टिकल सपोर्ट्स,
So how much the reaction was? 23 kilonewton. VB 19 kilonewton. Force applied 20 kilonewton. 10 kilonewton. 12 kilonewton at a distance of 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Total 43. Now we need to draw the bending moment diagram for this. तो bending moment diagram कैसा बनेगा? तो यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा? 23 इंटू 10, ये तो आ गया 230 किलोन्यूटन। ये कितना आएगा? 23 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 10, 23 इंटू 20 460 माइनस 200, 260 आ गया ये। इधर से जाओ 19 इंटू 10 190 आ गया ये। अगर इसमें आप सोचें कि मैं ऐसे लिखूं, मोमेंट टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस दैट, अरे भाई स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, वो सब सोम में करते हैं। अगर सोम अच्छा नहीं है तो स्ट्रक्चर में तकलीफ हो। सोम जैसे कंसेप्ट ना लगाएं, स्ट्रक्चर इतना टाइम नहीं होता है। Directly it's m1 m2 m3. Now their dip is this. How much it is? If you remember the points, this was C point, this was D point, and this was E point, that was B, and it is A. So I know that dip at D, it is given as 13 meter. 13 meter. Can't I find YC and YE? Why not? So we know the ratio of YC, YD, and YE must be equal to the moment at C, moment at D, and moment of E ratios. So for YC, YC to the YD ratio must be equal to MC to the MD ratio. And YC is equal to MC by MD into YD. That is, MC is 230, MD 260, YD given 13 is equal to 0 0 cancel, 13 23 1 नहीं cancel हो रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। 13 2 जा 26, 23 का हाफ कितना हो जाता है? 11.5 मीटर का आ गया। Similarly, we can write for YE, YD by YE ratio must be equal to MD by ME ratio. Therefore, YE can be calculated as ME upon MD into YD. That is, ME is 190 by MD is 260 into what is YD? It's 13. 13 1 is 13, 0 0, 2 is 36, 19 by 2. So it's 9.5 meter. Right. So YC is 11.5, YD 9. ठीक है, 11.5 आ गया ये 9.5 मीटर्स में, है ना? So we were interested to find this length L1, L2, L3, L4, है ना? उसी के लिए तो अल्टरनेटिव मेजर लिया हमने। Now how to calculate L1? See here, you know this is 10 meter, this YC is 11.5. Can't you find L1, है ना, by using Pythagoras? One can say L1 square is equal to 10 square plus 11.5 square, or L1 is equal to 10 square plus 11.5 square under root is equal to 10 square plus 11.5 square. Answer, it's 15.24 meter. चेक करेगा L1 15.24,
See, 15.24. ठीक है, just by applying the trigonometry for the further length, you can alternatively find this one, right? Similarly, if you want to find this, see here, what is this perpendicular distance become? Total 13 minus 11.5 करके दिखा देता हूँ एक और for L2. You want L2? L2 square must be equal to 10 square plus, what is this distance? This is 13 minus 11.5 का square. L2 is equal to root over 10 square plus 13 minus 11.5 का square is equal to 13 minus 11.5 square plus 100 root answer. It's 10.12 मीटर. L2 चेक करना चाहते हैं, चेक इट. L2 10.11 10.1118 आ रहा है, राउंड फिगर में मैंने ले लिया. अदरवाइज इफ यू गो विद 2 डेसिमल इट्स 10.11, राइट? एग्जैक्टली सेम डेटा आएगा. ठीक है, so this is the another approach. Apart from this, one question is there for your homework, will attach in the PDF. That's all for today. Thank you, classes.